हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फाइनल अकाउंट के बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट के प्लेलिस्ट के थर्ड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। राइट, लेट्स बिगिन विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग यहाँ पर भी चार बात हमको याद रखना है। पहला बात होता है कि जब हम हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आइदर ग्रॉस प्रॉफिट होगा यानी ग्रॉस लॉस भी होगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। अगर ग्रॉस लॉस होता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ना, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। राइट, एंड द सेकेंड वन इज द इट इज द नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये क्या है बच्चों, ये कि नॉमिनल अकाउंट है। राइट, ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। राइट, and the purpose of preparing the purpose of preparing the profit and loss account is to find out the net profit or net loss. The purpose of preparing the profit and loss account is to find out either net profit or net loss. Right, and in the fourth it records all operating expenses and losses in the debit side and records all the revenue incomes and gains, all the revenue incomes and gains on the credit side. Right, it records all operating expenses, all indirect expenses, all indirect expenses and losses in the debit side. Right, and all indirect or indirect incomes and gains on the credit side. Right, it records all indirect expenses, all operating को हम लोग बोलते हैं indirect, all operating expenses and losses in the debit side and all the indirect incomes and gains on the credit side. Right, ये चार बात आपको याद रखना है। it is the second part of the income statement. It is nominal account in nature. It is it reveals either net profit or net loss. It records all operating expense and losses in the debit side and all indirect other incomes and gains on the revenue in the credit side. Right, so the format of preparing the profit and loss account, तो फॉर्मेट हम लोग यहां पर लिखता हूं मैं, by gross profit brought down। अगर ग्रॉस लॉस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। राइट, इट रिकॉर्ड्स टू indirect expenses and losses, to records all indirect expenses and losses, and it records by indirect incomes and gains, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं, तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ग्रॉस लॉस, क्रेडिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके साइड और भी हम रिकॉर्ड करते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बच्चों मेनली दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको क्लासिफाई, इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सब 5 हेड से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। राइट,
जैसे कि हमारा जो होता है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में जो खर्चा होता है, राइट, ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और उसके उसके साथ भी जो सेलिंग एक्सपेंसेस भी होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसके साथ जो मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। और उसके साथ भी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है वो भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, राइट। और उसके साथ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसके साथ भी कुछ लॉसेस होता है, राइट। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस में ऑफिस में रेंट दिया है, ऑफिस में हम लोग सैलरी देते हैं, ऑफिस में रेंट देते हैं, ऑफिस में रेंट्स एंड टैक्सेस देते हैं, ऑडिट फीस देते हैं, ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है। ये सब खर्चा ऑफिस के, ये सब खर्चा को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, राइट, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन विद द परचेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट। And the second one is the selling expenses, right? In the selling expenses, we are paying the advertisement expenses, salesman salary, showroom rent, right? Commission paid to the salesman. ये सब हमारा होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में जब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, राइट, बट डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट दैट इज रिकॉर्डेड इन द ऑफिस एक्सपेंसेस, राइट। एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये सब रिकॉर्ड होता है मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस में, राइट। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि हमारे बैंक में चार्जेस होता है, डिस्काउंट हम लोग देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, राइट, ये सब देते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। और जो लॉसेस होता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं लॉसेस के साइड में, राइट। और उसके साथ हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बाई इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स होता है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किए, कमीशन रिसीव किया हमने, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, राइट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ये सब बिजनेस के लिए बेनिफिट होता है, तो इसीलिए हर एक बेनिफिट को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो खर्चा और लॉसेस होता है उसको हम डेबिट साइड पर दिखाएंगे, राइट। एंड द डिफरेंस अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, राइट। एंड द बैलेंस ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस और द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, right, are transferred to the capital account in the balance sheet, right. The balance of the profit and loss account are transferred to the net profit भी हुआ, अगर net loss भी हुआ, ये सब ट्रांसफर होगा कहां पर ना, हमारे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में, राइट। और इसके साथ भी some items which are not to be included in the profit and loss account, some items which are not included in the profit and loss account, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, items not included, items not included in the P&L account, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि आपका डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेंगे, बिकॉज देखो बच्चों, ये सब भी खर्चा होता है, इनकम टैक्स हम देते हैं वो भी खर्चा है, डोमेस्टिक के खर्चा भी है,
और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी देते हैं, उसको वो भी खर्चा होता है, लेकिन ये परचेज से नहीं वास्ता रखता है, तो ये भी खर्चा है। लेकिन ये खर्चा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स, right? On the income of the proprietor, on the of the income of the proprietor's income, we are paying the tax, right? Out of the business cash, we are paying the income tax for the proprietor out of the business cash, right? तो बिजनेस कैश से हम लोग जब इनकम टैक्स देते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं एक ही तरह की ड्राइंग से, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, राइट? अगर क्वेश्चन में दे रखा है इनकम टैक्स is related to the business expenses, then it is to be recorded in the debit side of the profit and loss account. Otherwise, if not, then it is not included in the profit and loss account, right? And the second one is the domestic expenses, right? जो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में बिजनेस के ओनर के घर में जो खर्चा होता है, जैसे कि सर्वेंट का सैलरी हम देते हैं, तो सब घर पे कोई मेंटेनेंस का खर्चा होता है, वो एक डोमेस्टिक एक्सपेंसेस होता है। वो if it is paid out of the business cash, then it is not to be recorded in the profit and loss account because it is purely drawings, right? And then we have the life insurance premium, right? If we are paid the premium for the owner's life or any of the dependent of his owner, if it is paid out of the business cash, then it is not to be recorded in the profit and loss account, right? It is also one type of a drawings, right? It is to be recorded on the drawings, right? So these items, income tax, right? मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर बता देता हूँ, LID। जब हम इंश्योरेंस करते हैं हमारे दिमाग में आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब LIC, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे वो मेमोरी टेक्निक आपको याद रखना है, LID, राइट? तो मैंने आपको इसको समराइज करते हुए मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार बात आपको याद रखना है। पहला बात है, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, राइट? एंड इट इज द नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। एंड थर्ड वन, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट और रिवील द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड इट रिकॉर्ड्स ऑल operating expenses by indirect expense and losses in the debit side and other incomes and revenues on the gains on the credit side, right? And the difference of the profit and loss account, either net profit or net loss, it is to be transferred, right? It is to be transferred to the profit and it is transferred to the capital account of the balance sheet, right? Pause the video, note it down. Let's begin with the some closing entries of the profit and loss account, right? तो बच्चों में यहाँ पर और एक बात भी आपको जानने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमको पता है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और इस नॉमिनल अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो हमको ये बात हमको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट it accommodates by it records only the revenue items, right? Not considering the capital items. It records only and only the revenue items, right? So it records all the revenue expenditures. It records all the revenue expenditures relating to the current year only, right? Relating to the current year only in the debit side of the profit and loss account. It records revenue expenditure in the debit side, right? It records all the expenditure in the debit side of the profit and loss account, whether it is paid or outstanding, relating to the current year only. चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, अगर अभी आप भी एक्सपेंसेस को पेड भी कर चुके हो, तो इसको भी हम इस साल में इसी को डेबिट साइड पर हम दिखाएंगे, राइट? अगर इफ देयर इज एनी रेवेन्यू इनकम्स, right? If there is any revenue incomes, it is to be recorded in the credit side of the profit and loss account, right? Whether it is received or accrued, relating to the current year only, right? And the balances of the different ledger accounts appearing in the
ट्रायल बैलेंस रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहे हुए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने सारे रेवेन्यू आइटम होता है जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम ये जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। तो फॉर ट्रांसफरिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and transferring of the incomes and gains, and we are recording the other incomes and gains account to debit to profit and loss account। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल के तरफ मैं आपको कुछ कुछ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, राइट। एंड the closing of the profit and loss account, when we are closing the profit and loss account, the either net profit or net loss, right? When it is net profit, now the excess of gross profit and other incomes and gains over the indirect expenses and losses is net profit, right? And the vice versa is the net loss, right? And if there is the net profit, the profit और मैं आपको अब थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि अगर नेट प्रॉफिट होता है कि नेट लॉस होता है, वो सब कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो नेट प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। अगर नेट लॉस होता है तो एंट्री हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हम ये क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं। अगर आपके इसी डिस्कशन के ऊपर आपकी कुछ भी डाउट हो जब भी अराइज होगा, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, कमेंट बॉक्स, एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।